हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इनक्रेडिबल प्रोडिजी। मैं हूं सोनाक्षी एंड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अपने घर के पुराने बोरिंग वासेस को एक नया लुक दिया जाए। मोस्टली हम सबके घर में ऐसे कुछ पुराने वासेस होते हैं जिनसे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी गेट बोर्ड। जैसे कि ये फ्लावर वाज जिसे मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, दिस ग्लास वन जिसमें मैंने काफ़ी प्लांट्स प्रोपगेट किए हैं, एंड लास्टली ये कैंडल जार जिसकी कैंडल मैं पूरी तरह एग्जॉस्ट कर चुकी हूँ। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उन बोरिंग वासेस को एक नया ट्विस्ट दिया जाए। So let's begin with our first DIY. सबसे पहले let's take this glass jar. इसको मैं एक रैटन रैप लुक दूंगी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड पे है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टिच फैब्रिक। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है कंपेयर टू ओरिजिनल रैटन। You can get this from any craft store. I have cut the fabric roughly 2/3 the size of the jar. अब हम इसे स्टिक कर लेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी एरल्डाइट स्ट्रॉन्ग ग्लू। To use this glue, you have to mix equal parts from both of these tubes and mix the liquid thoroughly. Now an important point to note. मैंने ये ग्लू इस फैब्रिक पे अप्लाई किया है एंड नॉट ऑन द ग्लास जार टू गिव दिस अ क्लीन लुक। नाउ केयरफुली अटैच द फैब्रिक टू द जार लाइक दिस। टू होल्ड द फैब्रिक इन प्लेस मैंने 2 रबर बैंड से इसे सिक्योर कर दिया है। ऑल इन ऑल दिस ग्लू टेक्स 5 to 10 minutes to dry. Now let's remove the bands and I can feel that the fabric is perfectly attached. इसके बाद मैंने ये मैक्रमे कॉर्ड यूज़ किया है टू कवर द लाइन्स वेयर द फैब्रिक एंड्स। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, पर आई प्रेफर्ड ग्लू गन। सिमिलरली मैंने बॉटम पार्ट को भी ऐसे कवर कर दिया। नाउ द जार इज रेडी। Now comes the next DIY, जिसमें कि हम इस फ्लावर वास को एक नया लुक देंगे। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये एयर ड्राई क्ले। तो स्टेप नंबर 1, वास पे क्ले का एक लेयर लगाना शुरू करते हैं। ऑल आई एम डूइंग इज टेकिंग छोटे छोटे क्ले के पीसेस एंड उन्हें टाइटली प्रेस करके लगाते रहना है। बिलीव मी, दिस DIY इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द 3 एंड द फनी पार्ट इज दैट इसके बाद मुझे काफ़ी साफ सफाई करनी पड़ी। But creating something on my own gives me so much contentment that I never mind cleaning the mess afterwards. Once the clay layer is done, you can use water to smoothen it a bit. But remember, not to go overboard with making it completely smooth. Why? Because wait for the next step. Step number 2. Take a fork and start scratching lines on the vase like this. ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, जिस वे में भी आप कंफर्टेबल हो। एंड वंस इट इज डन, लेट द वास ड्राई फॉर अ डे। नाउ कम्स द कलरफुल पार्ट, पेंटिंग इट। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाइट चॉक पेंट एंड विल बी मिक्सिंग इट विथ थोड़ा सा रेड एक्रेलिक कलर। मिक्सिंग कलर्स इज समथिंग आई फाइंड सो थेरेप्यूटिक। एंड देन all you have to do is pick up the paint brush and start painting the vase. Coloring anything fascinates me a lot. Initially, I thought कि पूरा properly color करते हैं, but then I started liking this imperfect way of painting, leaving some creases uncolored. I guess इस तरीके से ये clay का texture और भी better लगेगा. Let me know in the comments if you also like this. Also make sure to color the top part of the vase. It will take some hours for the color to dry completely, and once it is done comes the next step of using the varnish to seal this color. आपको ये varnish अच्छे से पूरे वास पे अप्लाई करना है। This will prevent the paint chip-offs in the future. I have used the matte finish of this, but you can also use the shiny one. And this beautiful DIY is now complete.
Now comes my favorite DIY, makeover of this candle jar. इसके लिए मैंने यूज किया है chalk paint. I will mention the shade and brand in the description box below. And इसमें अब हम ऐड करेंगे very coarse coffee powder to change the texture of the paint. आप sand भी यूज कर सकते हो, वो भी काफी coarse होता है. Coffee and color का ratio is roughly 2:1. अब इसे एकदम अच्छे से मिक्स करना है and look at this consistency. अब बाकी प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, बस ये मिक्सचर अप्लाई करना है यूजिंग अ पेंट ब्रश. वन थिंग इज टू बी नोटेड दैट पेंट करते टाइम सेम डायरेक्शन में ही ब्रश के स्ट्रोक्स आने चाहिए, उससे काफ़ी यूनिफॉर्म लुक आएगा. लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस पेंट एंड आई एम ऑल्सो इन लव विद द शेड ऑफ दिस कलर. Isn't it too good? Okay, so once it is complete, इसे dry होने के लिए leave it for an hour or so, and meanwhile melt your wax using double boiler method. Now the next step is to give some metallic detailing. थोड़ा सा high end बनाते हैं इसको. इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये गोल्ड पेंट, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, बस थोड़े से ग्रैन्यूल्स को गोल्ड शेप देने के लिए. You can use any other metallic shade. Look how gorgeous it is looking. I have also colored the rim of this jar. And once all the gold detailing is done, let's bring the melted wax. अब सबसे पहले हम ये कैंडल विक फिक्स कर लेते हैं. इसे थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टिक. नाउ बिकॉज आई वॉज हैविंग दिस लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, मैंने उसके कुछ ड्रॉप्स वैक्स में डाले हैं. यू कैन यूज़ एनी अदर एसेंशियल ऑयल और कम्प्लीटली अवॉइड दिस स्टेप. अब बस केयरफुली वैक्स को जार में डालना है एंड लेट इट रेस्ट फॉर फ्यू आवर्स. एंड योर ब्यूटिफुल कैंडल इज रेडी. If you really liked any of the 3 ideas, then please hit the like button. And if you want to see more such DIY content, then please consider subscribing. Thank you.